Warning: this video contains super awesome content not suitable for people who don't enjoy super awesomeness. Viewer discretion advised. Immaculating and scintillating design. Guys, the new Kawasaki ZX6R is assembled in India from completely knocked down and it is priced somewhere between 10.49x showroom. It has a whooping 636cc inline 4 engine that churns out to a 128 bhp of power at 13,500 rpm and develops a smashing 17.5 Newton meter of peak torque at 11,500 rpms. The Ninja 6R is also equipped with technology bits like KIBS, which is the Kawasaki Intelligent Anti-Lock Brake System, KRTC, which is the Kawasaki Traction Control, and KQS, which is the Kawasaki Quick Shifter. On the features, the bike comes loaded with the LED lamps, LED tail lights, a smart instrument cluster with a large analog tachometer flanked with warming lamps on one side, giving it a smashing look. The braking duties are handled by Nissin monoblock calipers, gripping dual 310 millimeters of rotors at the front wheel with a 220 single disc, the 17-inch alloys, and the beautiful infometer. गाइस, बहुत ही अमेजिंग पावर है 6R की। अभी मैं और मेरे साथ सुधांशु R1 पे और मैं 6R चला रहा हूँ। भाई क्या परफेक्ट लीन कर रही है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है विद दीज ब्रांड न्यू शूज़ कि आई कैन नॉट इवन टेल
बाइक इज सो अमेजिंग। ये देखो मामे खड़े हैं, ये मामे कहीं पकड़ ना ले। वैसे ही बहुत दिन से बहुत लोग बोल रहे थे कि जम्मू में ज्यादा वो चल रहा है। अब इसकी पावर देखो। ओ फक फक भाई, क्या खतरनाक पावर आ रही है। भाई ये ओ माय गॉड। गाइस ये बहुत इजीली 150 180 क्रॉस कर रही है। बहुत ही अमेजिंग बाइक है। पीछे R1 कैचअप कर रही है। मतलब इमेजिन करो कि R1 के साथ 6RX 600 सीसी की बाइक और R1 को टक्कर दे रही है। और जल्दी जल्दी सुधांशु साथ चलते रहे, अमेजिंग शॉट्स आने वाले हैं। Guys, this is the kind of bikes one uses at track। मतलब ये बाइक सिर्फ ट्रैक के लिए ही बनी है, सिर्फ ट्रैक के लिए बनी है। क्या अमेजिंग पावर है, क्या पिकअप है। बहुत ही सही गियर रेशो आ रहा है इसका यार। अभी देखो भाई, अब हम वापस पिट स्टॉप वापस आ गए हैं। अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे, पर आप पावर देखो यार। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, भैया ने बोला कि उनको R1 की राइड चाहिए। मैंने R1 दी, उस पर कैमरा ऑन था। मैंने कहा भैया की कुछ फुटेज रिकॉर्ड हो जाएगी। पर जस्ट इससे पहले जो आपने देखा, जैसे मैं और सुधांशु बाइक राइड करके गए थे, तो उस वजह से उनको लगा कि बाइक पे थोड़े स्टंट्स चल रहे हैं, ये सब चल रहा है, बिकॉज उसकी साउंड ही वैसी थी। तो उन्होंने भैया को पकड़ लिया जब वो मेरी R1 लेके आए। फिर भैया को 2-3 जगह कॉल वगैरह करना पड़ा वहाँ से निकलने के लिए, बिकॉज वो R1 के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहे थे। वो सारे मेरे पास थे और मैं पीछे पिट स्टॉप पे वेट कर रहा था। तो यहाँ पे भैया बता रहे कि वो तो आए नहीं थे। सही बात है, वो तो बेचारे पहली बार आए तो उसी में फंस गए। For today, the 650F, the Fat Bob, the Mighty Pusa, all said और वो चले गए. So this is me signing off in today's vlog. Let's see how the next vlog.